calculate liquid ratio, proprietary ratio, stock turnover ratio, capital gearing ratio, data's velocity, and offer your comments. ठीक है, तो ये data's velocity हमारे लिए new है. I will tell you what how to calculate that. ठीक है, this is something new for us. Data's velocity. Okay, so this is a balance sheet of the old style. Preference share capital, equity share capital, reserves and surplus will all come under shareholders' funds. Secured loans is your borrowed funds. Okay, loan liya hai, that is called secured loans. Current liability and provisions are all your quick liabilities. Fixed asset is under the category of sources of, your application of funds. Stock is your current asset under non-quick. Sundry debtors is your current assets, quick assets. Advance income tax is current assets. ये prepaid है. This is prepaid income tax, so it is non-quick. Cash at bank is current assets under quick. Okay. Total sales during the year was 77,76,000, including cash sales of 5,76,000, which yielded a gross profit of 25% on sales. The stock on 31st March 2016 was 4,32,000. Assume your working days are 360 days in a year. अभी क्वेश्चन में बोला है you have to assume 360 days in a year. तो no issues, we will assume that. तो सबसे पहले देखो आपका बैलेंस शीट डेट क्या है बेटा. ओके, तो आपकी बैलेंस शीट डेट तो है 31 मार्च 2017, और ये जो स्टॉक नीचे आपको दिया है ये आपका ओपनिंग स्टॉक है, and the stock that is given to you in the balance sheet is a closing stock. Obviously the stock that is reflected in balance sheet is always closing stock. Okay, so these things are new for you. ये नया है हमारे लिए, stock velocity and data's velocity. Okay, so let us see how we calculate that without making the balance sheet. I told you, no, once I will teach you with balance sheet the ratios, then one without balance sheet, and then ratios. Okay, so first they have asked you to calculate, क्या पूछा है, liquid ratio. Now in this question they have already specified क्या क्या ratio निकालना है, so we will do that. First पूछा है liquid ratio. Okay, liquid ratio मतलब quick ratio. तो formula is quick assets upon quick liability. Okay, yeah. Quick assets. Under quick assets, you have debtors and cash. So your debtors is how much? 8 lakhs and cash is 7 lakh 90. So that makes it to 15 lakh 90. Then your quick liabilities mean you have current liabilities plus the provisions, and that makes it to 5 lakh 40 plus 8 lakh 10. 13 lakh 50. ठीक है, दोनों को डिवाइड करो. 15 lakh 90 को divided by 13 lakh 50. So it makes it to 1.177, make it 1.18 is to 1. Okay, 1.8 is to 1. That's the answer. And these are the indications that it gives. Okay, क्विक रेशियो का स्टैंडर्ड रेशियो कितना है, कितना होना चाहिए, 1:1 होना चाहिए, और अपना आंसर कितना है 1.18, मतलब ज़्यादा है, स्टैंडर्ड से ज़्यादा है. Okay, so obviously it is greater than the standard ratio, that is the industry ratio, 1:1. So it indicates ability of the company to meet its liability, matlab to pay off its liability quickly. Okay, and it also is an indicator that the short-term solvency of the company is better. Okay. Next is proprietary ratio, shareholders funds upon total assets. Shareholders funds कैसे मिलता है? Equity share capital plus preference capital plus reserves and surplus minus miscellaneous expenditures, also known as fictitious assets. Okay. So shareholders funds is how much? 5 lakhs. I mean equity share capital is how much? 5 lakhs. Preference share capital is 2 lakhs. 5 plus 2 is 7.
and his reserves and surplus is 10 lakhs. So that makes it to 17 lakhs. There is no fictitious assets or miscellaneous expenditure. So the numerator is 17 lakhs. Total of fixed assets कैसे मिलता है फिक्स्ड एसेट्स सॉरी टोटल एसेट्स कैसे मिलेगा टोटल एसेट्स इज फिक्स्ड एसेट्स प्लस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स प्लस करंट एसेट्स ओके so total fixed assets okay what we taking your so total fixed assets कितना है 12 लाख तो 12 lakhs long term investments नहीं है zero and current assets में I have debtors cash stock and prepaid income tax okay advance income tax जिसमें से क्विक एसेट्स मेरे पास है मुझे पता है वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड ऊपर क्विक एसेट्स 15 lakh 90 yes okay debtors plus cash and non quick में we have two दो ही नॉन क्विक आइटम्स है दोनों क्वेश्चन में है दैट इज स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस ठीक है सो 12 lakhs plus 15 lakh 90 plus 5 lakh 40 plus 1 lakh 20 34 lakh 50 मेरा शेयर होल्डर्स फंड्स कितना है 17 लाख तो 17 lakhs divided by 34 lakh 50 into 100 तो 49.275 make it 28 49.28 okay I told you this ratio indicates ये जितना ज़्यादा होगा उतना बेटर होगा तो ये कम है 49 का ये जितना 100 की तरफ होगा ना उतना ये बेटर होगा so this is actually a very low ratio 49.28 okay that means low stakes of owners जैसे अगर मेरा total assets is 100 rupees तो उसमें से सिर्फ 49.28% is shareholders funds okay it should be actually more always ज़्यादा होना चाहिए okay because what is shareholders fund students it is total of sources of funds बराबर हाँ और ये जो आपका है टोटल एसेट्स ये क्या है ये एप्लीकेशन ऑफ फंड्स है ओके तो ये ऑलवेज ऑब्वियसली ये ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि अगर ये कम हुआ तो दैट मीन्स जो आपने जो पैसा आपको मिला है सोर्सेज ऑफ फंड्स के थ्रू जो पैसा आया है उसका एक बहुत ही छोटा सा पार्ट आपने एसेट्स में डाला है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में डाला है ओके दैट्स द रीजन so it always has to be a better ratio higher तो अगर आपके पास 100 रुपये है तो 100 रुपये में से आपने सिर्फ 49 रुपीज़ एसेट्स में इन्वेस्ट किया है इसका ये नहीं होता so from long term point of view it is not good for the financial position of the company next stock turnover ratio okay now this is COGS upon average okay the formula turnover मतलब how many times in a year your stock is able to be converted into sales इसका ये मतलब होता है I repeat stock turnover indicates how many times in a year your stock is able to get converted into sales
That is called as stock turnover ratio. So numerator is COGS. अब तुम बोलोगे मैम COGS तो PNL में होता है. अग्री, COGS PNL में होता है, इसलिए तो क्वेश्चन में COGS का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. सी PNL इंफॉर्मेशन दिया है क्वेश्चन में, टोटल सेल्स दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, ओके, ओपनिंग स्टॉक दिया है. तो ये सब क्यों दिया है? सो दैट वी कैन कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो का न्यूमरेटर, दैट इज COGS. एम आई क्लियर अबाउट दिस? समझ में आ रहा है? Okay, so obviously I will not make a P&L revenue statement. We will just use a shortcut to it. Sales minus gross profit is COGS, we know that. Okay, तो कितना बोला है? Gross profit is 25% on sales. तो I'll have to use this here. Sales less COGS, or you can take sales less gross profit. It's up to you how you want to take it. ओके, आप ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते थे. सी, मैं आपको बताती हूँ. सी प्लस पी इक्वल टू एस, इससे भी आपको आंसर मिलेगा. ओके, सो क्या बोला है? ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन सेल्स. So this is 25, so this is 100, obviously this is 75. Okay, सेल्स दिया हुआ है, टोटल सेल्स दिया हुआ है ना, 77,76,000. Okay, so sales is 77,76,000. Okay, so cross multiply, we will get the answer. Simple. Okay, so 75 into 77,76,000 divided by 100. कितना आया? 58,32,000 मेरा COGS है. 58,32,000. Okay, so even using this formula you will get the answer. Okay, वो भी ठीक है. सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट भी अगर आप यूज़ करोगे तो भी आपको राइट आंसर मिलेगा. ओके, एम आई क्लियर अबाउट दिस? यू कैन यूज़ एनी वे बिकॉज दिस इज सिंपल मैथ्स. सिंपल मैथ्स से ही समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड दिस स्टेप? ओके, आई गॉट माई COGS. मेरा न्यूमरेटर मुझे मिल गया 58,32,000. अभी मुझे क्या निकालना है? एवरेज स्टॉक. एवरेज कैसे निकालते हैं? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2. ओके, opening stock plus closing stock divided by 2. So opening stock is given in the question 4,32,000. Closing stock is there in the balance sheet 5,40,000. So 4,32,000 plus 5,40,000 divided by 2. 4,86,000. Okay. So 58,32,000 divided by the denominator 4,86,000. So my answer is 12. That is 12 times in a year. Okay. So 12 times in a year मतलब 12 times in a year stock is being converted into sales. Okay. अभी इसका क्वेश्चन में क्या पूछा है? वेलोसिटी. वेलोसिटी मतलब स्पीड. The speed at which your stock is converted into sales, that is called as velocity. I repeat students, what is velocity? The speed or the rate at which your stock is getting converted into sales. मतलब कितने दिन में एक स्टॉक सेल्स में कन्वर्ट होता है. तो या तो आप उसको मंथ्स, मैंने when I say the speed, so if the speed can be in months also, I can denote speed in days also, and I can denote speed in weeks also. Okay, so the formula for stock velocity is 1 upon stock turnover ratio into, I can indicate in days, to 365 days, 12 months, or 52 weeks. In a year there are 12 months and in a year there are 52 weeks. Okay, ये स्टैंडर्ड है. ये स्टैंडर्ड रेशियो. लेकिन इस क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला हुआ है कि आपको 360 डेज अज्यूम करना है. ठीक है, तो मतलब इस सम में दे वांट योर स्पीड का आंसर इन डेज. ओके, सो देखो 360 डिवाइड बाय 12 मतलब 30 दिन.
तो 30 दिन लगते हैं अपने स्टॉक को सेल्स में कन्वर्ट होने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपको मंथ्स में चाहिए तो 12 डिवाइड बाई 12, 1 महीना लगता है स्टॉक को सेल्स में कन्वर्ट होने के लिए। इफ़ यू वांट योर आंसर इन वीक्स तो 12 डिवाइड बाई 52, सो इट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 4 वीक्स। ऑब्वियसली अगर तुम देखो तो 30 दिन 1 महीना होता है और 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो अवर आंसर इज करेक्ट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? सो 12 times in a year means 30 days stock velocity indicates good stock control, right? जितना तुम्हारा स्टॉक क्या बोलते हैं वेलोसिटी, the number of days is less, it is a good indicator that your business is doing good. जितना तुम्हारा स्टॉक वेलोसिटी ज़्यादा होगा, हाँ, तो इट इंडिकेट्स दैट देर इज़ नो मच डिमांड फॉर योर स्टॉक एंड दैट इज़ वाई द सेल्स आर लेस। बट हाँ, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का बहुत सी चीज़ों पर डिपेंड करता है, आपका नेचर ऑफ बिजनेस, आपका टाइप ऑफ प्रोडक्ट भी डिपेंड करता है। ओके, अब जैसे यू डील इनटू स्पेशलाइज्ड कार्स, ओके, और कस्टम मेड कार, तभी जो कस्टम मेड कार्स होती है तो बड़ी कॉस्टली होती है, तो उनका डिमांड तो साल में एक बार या 2 साल में एक बार होगा। ओके, हाँ, तो उनका स्टॉक वेलोसिटी तो ईयर्स में होगा। ओके, उनका स्टॉक वेलोसिटी हो सकता है 250 डेज हो, 200-250 दिन में एक बार एक गाड़ी दिखती है, but I'm talking about customized cars. Okay, yeah. So it also depends on the type of product that you are selling. Then capital gearing ratio, preference share capital plus borrowed funds upon equity shareholders funds. Okay, preference share capital is given in the question 2 lakhs, borrowed funds is there 4 lakhs. Equity share capital, equity shareholders funds चाहिए सिर्फ, only equity shareholders funds. So how do you get equity shareholders funds? You will take equity share capital, preference मत लेना because equity shareholders funds बुलाएगा, add reserves and surplus, okay, minus miscellaneous expenditure. Okay, so it's 6 lakhs divided by 5 lakh plus 10 lakh is 15 lakhs. So 6 lakhs divided by 15 lakhs. So my answer is 0.4:1. So it indicates sign of low gearing. Then data's velocity ratio. Again, data's का velocity पूछा, तो data's upon credit sales into, if you want your answer in days, speed, na, the rate at which data's are able to, yeah, data's collection period. Data's velocity मतलब data's collection period. डेटर्स को हम क्या करते हैं, उधार पे सेल्स देते हैं, उधार पे सेल्स करते हैं ना उनके साथ, तो उनसे पैसा लेना होता है। ओके, या, सो इट इज़ नोन एज डेटर्स कलेक्शन पीरियड ऑल्सो। ओके, सो डेटर्स हाउ विल यू गेट फ्रॉम क्रेडिट सेल्स, तो 7,76,000 मेरा टोटल सेल्स था, उसमें से 5,76,000 मेरा what do you call cash sales था, तो 77,76,000 minus my cash sales 5,76,000, तो 72 lakhs का मेरा क्रेडिट सेल्स है। ओके, डेटर्स क्वेश्चन में दिया है 8 lakhs, सो 8 lakhs डिवाइड बाय 72 lakhs into 360 days, तो 40 days में डेटा से पैसा आता है। ओके, इट मीन्स दैट अगर मुझे ये आंसर मंथ्स में चाहिए तो
12 months. So 1 month, 1.3 months अप्रॉक्स. वीक्स में चाहिए आंसर तो 5.77 वीक्स अप्रॉक्सीमेटली, मतलब 6 हफ्ते लगते हैं टू, मतलब कलेक्शन पीरियड, मतलब जब सेल्स होता है तो उसके 6 हफ्ते के बाद पैसे आते हैं. क्रेडिट सेल्स होता है 6 हफ्ते के अंदर कलेक्शन पीरियड, मतलब पैसे आए. समझ में आया? तो अगर आपने सेल्स किया है फेब के फर्स्ट वीक में तो आपको पैसा कभी मिलेगा मार्च में. कब? लेकिन हाँ, फेब का 4 हफ्ता और मार्च का 2 हफ्ता ख़त्म हो जाएगा उसके बाद. समझ में आ रहा है? इज दिस क्लियर? अंडरस्टूड? डेटा's velocity, it indicates data's credit period or collection period. Clear everyone?